Assalamu alaikum dear viewers and students. Hope you're doing good, staying safe at your home in this pandemic situation which is spreading all over the country. May Allah keep us in His protection. May Allah keep us protect in His blessings. May Allah bring us shadows of His blessings upon all of us, upon all of the humanity. I am here today with another lecture, with another virtual lecture at your most favorite, most authentic and the most authentic platform of the knowledge, that is Mccs Educational Network. Before I start, I just want to remind you that please subscribe, share and like our channel and press the bell icon because ये घंटी आपके मुस्तकबिल की ताबनाकी की उम्मीद है. So the topic under discussion today is basically, let me take the markers. Yes. The topic under discussion for today is forms of a verb. Before I start, I just want to give you an open challenge, an open debate in front of you that I am giving you the challenge. The challenge is that I'm going to change the whole concept of the language which you have taken from your childhood to till today. Either you are in intermediate, if you are in SSC, or you're in graduation, or MPhil or PhD, at which level you are, I'm just going to change the whole concept of the language. And that is the very basic concept of the language, that is the form of the verb. And here I just want to mention this thing that this specific topic is not only for the 9th, 10th, 8th or first year or second year. This is basically the basic learning, you can say that topic for learning the language, English language, and it is not only for the specific classes, it is all for all those people who are learning the language, English language, and it is basically present in all the languages, like in Urdu, in Arabic, in English, and many languages of the world. This basically specific topic is present all over all the language which is being spoken in the world today. So forms of verb. और मैंने बात करी थी कि I just want to change, I am just going to change the concept of the language. जो आपको बचपन से concept दिया गया. अच्छा, वो concept क्या था? हम उसको ज़्यादा तवील में लेके जाते हैं और जल्दी से हम उस concept की तरफ आते हैं कि वो concept आपको आपके teachers ने क्या concept देगा. Remember this thing. I'm not going to say that this concept is wrong, but I think that this concept is incomplete. और उसको आज मैं आपके सामने कंप्लीट करने जा रहा हूँ. और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा. मैं I'm going to change your concept with proof. So, how many forms of verb we have? और basically जो मुझे बचपन से बताया गया, जो आपको बचपन से बताया गया कि there are 3 forms of verb. अच्छा जी, चले बहुत सारे लोगों को 3 forms of verb तो याद होते हैं, लेकिन उनके names याद नहीं होते. चले हम उनको names को भी mention कर देते हैं. That is present, past and past participle. जी, ये 3 forms of verb. अच्छा, this concept is incomplete. Today I'm going to give you 2 more forms of verb. Yes, viewers, yes, my dear students, I'm going to give you 2 more forms of verb, which makes you really easy, really simple this specific topic, in this specific topic. ओके जी, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ये बचपन तक हमें बताया गया कि जनाब ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, लेकिन देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और उनके नेम्स भी हैं. मैं आपको नेम्स भी बताने जा रहा हूँ कि उनके क्या नेम है. जी, 4th फॉर्म है जी, उसका नाम है कॉन्टिन्यूस. Yes, ladies and gentlemen, yes viewers, this is the 4th form of verb. अच्छा, ये मैं वैसे हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैंने अपनी तरफ से बना नहीं ली. मैं इसको conceptually इसको मैं आपके सामने प्रूव करूंगा. The 5th form is indefinite form of a verb. The 5th form of the verb is indefinite form of the verb. अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को सोच रहे होंगे कि यार ये तो बिल्कुल हवा में बात कर दी. कॉन्टिन्यूस भी कोई फॉर्म हो सकती है. हमें तो टीचर्स ने बताया था कि जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दें तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. और इंडेफिनिट भी कोई फॉर्म होती है, तो हमें तो टीचर ने बताया था इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको s और es के साथ, आप फर्स्ट फॉर्म के साथ s और
ES लगाएं तो वो जो है वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी और वो प्रेजेंट डेफिनेट ही शी इट के साथ जनाब उसको आप पुट कर सकते हैं। तो क्यों हम ये देसी फॉर्मूलाज जो है वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं? हम प्रॉपरली चीजों को नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? हम प्रॉपरली चीजों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे कि हमें एस और ई एस लगाने की जरूरत क्या है? जो अगर हम एस और ई एस लगाते हैं तो मीनिंग किस तरह से चेंज होता है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन गिव व्यूअर्स, इन तमाम 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हाँ जो वर्ड होता है वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है, एक अलग फॉर्मेशन रखता है, एक अलग मीनिंग रखता है in तमाम 5 forms of verb. So the thing is that present, past, past participle, continuous, indefinite. ठीक है जी? Present में अगर हम इस word को ले लेते हैं run. Run means what is the meaning of run? भागना. ये इस specific present form में जो run है उसका मतलब है भागना. अगर past form में run होगा, ran होगा तो उसका मतलब क्या भागना होगा? नहीं, भागा. That these two words are completely different. These have completely different formation, completely different concept. The third form is of the verb is past participle. तो उसमें जो हमने verb का word है वो है run, भाग चुका. That is the past participle meaning of the form of the verb. अब हम अपने continuous form of the verb की जिसमें हमें वो एक basic concept दिया गया कि जनाब ये ing आप उसके साथ लगा लें तो running हो जाएगा. ठीक है जी? running that is भाग रहा है. completely changed formation, completely changed concept which is given in other 3 words. ठीक है? हर एक वर्ड की एक डिफरेंट फॉर्म बन रही है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन रहा है, एक डिफरेंट मीनिंग बन रहा है. ठीक है? तो हम उसको फॉर्म ऑफ द वर्ब ही कहेंगे. द फिफ्थ फॉर्म इज द रन्स, भागता है. दैट इज एन अदर फॉर्म बिकॉज इसकी फॉर्मेशन चेंज है, इसका कॉन्सेप्ट चेंज है. Why we are saying that? Why teachers are saying that? For the common understanding, for the easiness. ये easiness नहीं, ये बच्चों को confuse किया जा रहा है. That's completely the confusion. अब बहुत सारे बच्चे ही शीट के साथ runs फर्स्ट फॉर्म के साथ वो जनाब वो s लगाना भूल जाते हैं. वो जो कॉन्सेप्ट हमें टीचर्स ने वो जो एक टिपिकल किस्म का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था टीचर्स की तरफ से, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ s लगा दें तो वो जनाब आपका इंडेफिनिट फॉर्म ही शीट के साथ आपका फिलअप हो जाएगा. तो व्हाई डोंट वी टेल अस टू द स्टूडेंट, टू द चिल्ड्रन कि जनाब ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी ही शीट के साथ. और अगर आई विल दे यू होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. हम जनाब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लिखते थे जी फर्स्ट फॉर्म सब एस और ई एस लगा दें. दैट इज क्वाइट इजी. हम कह सकते हैं जनाब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ जस्ट पुट द फर्स्ट बेसिकली इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ही शी इट के साथ फिफ्थ फॉर्म होती है, runs. ठीक है? So this is basically the concept and I'm just putting a challenge in front of all of you कि आप इस चैलेंज को प्रूव करें, आप मुझे गलत साबित करें. मेरी वीडियो के लिंक के साथ आप वीडियो बनाएं और उसमें मुझे हैशटैग करें. ठीक है? MCCS एजुकेशनल नेटवर्क के साथ, because this is the I have already mentioned that this is the most authentic platform of the knowledge. हम कोई भी बात आपसे without authentication, without confirmation और इस तरह से हम कोई भी बात आपके सामने नहीं पेश कर रहे. So इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बेसिकली अगर हम टॉपिक को देखा जाए तो HSC और HSC 1 और HSC 2 के लिए दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. और इसके तकरीबन जो वॉल्यूम है पेपर में वो उसकी तकरीबन 5 मार्क्स की है. अच्छा, एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया है और उस पूरे स्टेटमेंट में एक वर्ड को फॉर्म ऑफ वर्ब को उन्होंने अंडर द ब्रैकेट कर लिया है, अंडर द ब्रैकेट किया है. और समटाइम वो फॉर्म ऑफ द वर्ब करेक्ट होती है, समटाइम वो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो गलत होती है. तो जब वो फॉर्म ऑफ द वर्ब गलत होती है तो उसमें जनाब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट करनी पड़ती है. और दिस इज रियली कंफ्यूज्ड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स. तो आज हम उसको थोड़ा सा सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन हम इसको नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके लिए थोड़े से डिफरेंट हो जाएं और आप क्लियर हो जाएं अपने इस कॉन्सेप्ट की तरफ. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे. आज का जो टॉपिक था दैट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दैट इज कंप्लीटली
दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, हम इसको इनकम्प्लीट करके जा रहे हैं और इसको पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज आप सबके लिए स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स मैं ये चैलेंज पुट कर रहा हूँ कि आप इस 5 फॉर्म्स ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट को देखिए, गौर करिए, इसको ऑब्जर्व करें। इफ आई एम रॉन्ग, आपको लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ, तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कीजिए, मेरे साथ डिबेट कीजिए। इन पैंडेमिक सिचुएशन हम ऑनलाइन डिबेट करेंगे, आप मुझे प्रूव गलत करने की साबित कोशिश कीजिए, लेकिन दिस इज बेसिकली एन एजुकेशनल डिस्कशन, तो इसमें बहुत कुछ हम सीखते हैं और यही सीखने का, यही लर्निंग का प्रोसेस इंशाल्लाह जारी रहेगा। तब तक के लिए हम आप सबसे इजाजत चाहते हैं। सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट क्वेश्चन HSC 1 और HSC 2 फॉर्म्स ऑफ वर्क को डिस्कस करेंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट द एंड अल्लाह हाफिज, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।